Hello friends, welcome to my channel Vidya tutorial. Friends, please subscribe my channel, like my video and share my video with your friends. Students, today we will discuss on labeling and deinstitutionalization in special education. Now we discuss about labeling in special education. Labeling means placement of a child in a specified group or class so that special educational arrangements are made for them. So labeling में जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनको एक स्पेशल ग्रुप में और एक स्पेसिफिक क्लास में प्लेसमेंट किया जाता है एंड उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की अरेंजमेंट किया जाता है. Labeling refers to the process of identifying that a student meets eligibility criteria for special education services. So, labeling में जो disabled children special educational services की रिक्वायर करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. To receive special education services, a child must be identified as having a disability such as mental retardation or learning disabilities etc. So एक चाइल्ड को एक पर्टिकुलर डिजेबिलिटी ग्रुप में लेबलिंग करने के बाद उसको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है. सो बिफोर प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड ए स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज ही मस्ट बी identified as having a disabilities such as mentally retarded and learning disabilities. Persons with disabilities are labeled based on their medical and educational diagnosis. So जो disabled person होते हैं उनको medical and educational diagnosis के बेस पर labeled किया जाता है. Now we discuss about advantages of labeling. Number 1, identifying students in specific categories of disabilities allow educationists to design an educational plan specifically for the students which will best meet their educational needs. So labeling के माध्यम से जो disabled children होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशनल अरेंजमेंट्स की प्लानिंग करना इजी होता है so that it will able to meet their educational needs and requirements. Point number 2, by labeling a child, they will receive extra services that they may not have been able to receive otherwise. So labeling के माध्यम से जो disabled children होते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है जो कि इन अदर वे प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है. पॉइंट नंबर 3, labeling makes it easier for legislatures to develop laws to protect the persons with disabilities. So labeling helps the legislatures or the policy makers to develop the laws and to frame the policies to protect the human rights of the disabled children. Point number 4, labeling provides the person without disability an opportunity to research about the condition and make them more tolerant of the person with the disability. So labeling जो नॉन डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू कंडक्ट रिसर्च अबाउट द कंडीशंस ऑफ द डिसेबल चिल्ड्रन and to know the conditions of the disabled children and make them more tolerant of the persons with a disability. Now we discuss about the disadvantages of labeling. Number 1, labels tend to focus on impairment and may encourage people to see the limitations of the child and not his strength. So labeling के माध्यम से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों की इम्पेयरमेंट्स को ही फोकस किया जाता है और उन लोगों को लिमिटेशन को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इनकी क्या स्ट्रेंथ होता है उसको इग्नोर किया जाता है और जो कॉमन पीपल होते हैं वो उन लोगों का लिमिटेशन को ही फाइंड आउट करते हैं और उनको स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं. पॉइंट नंबर 2, व्हेन ए चाइल्ड इज नेगेटिवली लेबल्ड, people's expectations of them are lowered
and as a result the child may not be adequately receive the opportunities needed to reach his or her potential. सो जब एक चाइल्ड को लेबल्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर डिसेबल्ड कैटेगरी में, सो जो कॉमन मैन होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस उन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए कम हो जाता है, और जो डिसेबल्ड चाइल्ड होता है उसको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है टू डेवलप टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल. पॉइंट नंबर 3, लेबलिंग चिल्ड्रन फॉर प्लेसमेंट इन स्पेशल क्लासेस हैज़ ए स्टिग्मेटाइजिंग इफेक्ट which create a feeling of unworthiness among the disabled children. जब लेबलिंग के माध्यम से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों को एक स्पेशल क्लास में प्लेसमेंट किया जाता है, इट क्रिएट्स ए स्टिग्मेटाइजिंग इफेक्ट दैट इज ए फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, हेल्पलेसनेस, shame among the disabled children. Now we discuss about deinstitutionalization. Deinstitutionalization is a movement that advocates the transfer of mentally disabled person from public or private institutions such as psychiatric hospitals back to their families or into community-based homes which tend to be less restrictive than the institutions. Deinstitutionalization movement में जो mentally disabled person होते हैं उन लोगों को पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और साइकेट्रिक हॉस्पिटल से उनकी फैमिली में और कम्युनिटी बेस्ड होम्स में ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स और द इंस्टीट्यूशंस, जहां उन लोगों को एक कंजेनियल होम एनवायरनमेंट में प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. इन द लेट 20th century it led to the closure of many psychiatric hospitals as patients were increasingly cared for at home in halfway houses and clinics. So in the late 20th century, maximum number of psychiatric hospitals were closed and the mentally disabled persons are cared at their home and in halfway houses and in clinics. Deinstitutionalization works in two ways. The first focus on reducing the population size of mental institutions by reducing both admission and readmission rates, and the second focuses on reforming psychiatric care to reduce feeling of dependency and hopelessness among the disabled children. So जो deinstitutionalization movement होता है वो दो दिशा में कार्य करता है. पहला दिशा है to reduce the population size of the mental institutions by reducing the admission and readmission rates, and the second way is to reforming the psychiatric care to reduce the feeling of dependency and hopelessness among the disabled children. So second way में उन लोगों को जो साइकेट्रिक केयर एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको रिफॉर्म करता है सो दैट इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी एंड होपलेसनेस among the disabled children. So students, now we wind up our class. If you have any doubt regarding this topic, please ask me on comment box.